वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम जेके सर, विजडम क्लास का सर है। ज्योमेट्री कम से कम 25 साल से ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, तो आपके लिए ज्योमेट्री एकदम सीधा बाएं हाथ का छोटा फिंगर करेंगे हम। सिंपलेस्ट ज्योमेट्री, मच easier for you. Let us study the basics of geometry today. Right. Basic, सबसे basic in geometry is point. Point. Point हिंदी में बिंदु बोलते हैं. Point has got no dimension. No dimension मतलब दिखना चाहिए, लेकिन उधर साइज एकदम जीरो आना चाहिए. That's called a point. Next, we have rays, R-A-Y, ray. Starts from a point, goes like this, goes up to infinity. Infinity बोलेगा तो इधर से भी जाएगा, बोल के बाहर जाएगा, श्रीलंका जाएगा, न्यूयॉर्क जाएगा. Infinity मतलब इधर भी बंद नहीं बनेगा. So that's called infinity. Goes up to where? Ray goes up to infinity. This ray is made up of many points. ऐसा छोटा points, इतना points बनाएगा, infinity that point बनाएगा, so that's called a ray. So ray contains how many points? Infinite number of points. Ray goes up to where? Up to infinity. But it starts from here. Let us make it start from the point. If I name it as O, it starts from O, goes up to infinity. But ये क्या है? कौन सा डायरेक्शन में जाता है वो भी बोलना पड़ेगा. So we will put another point here A. This is called ray OA. Ray OA. It is going in this direction. Arrow दिया है. That means it is going in this direction. Suppose I put one more point, it has got infinite point. और एक point डाला, तो उसको ray OB भी बोल सकता है. Ray OA is the same thing as ray OB. It is the same thing as तुमको जो नाम लिखने का इधर P is also ray OP. Ray OA same as ray OB is the same as ray OP. इधर कितना पॉइंट डालेगा? This is the ray OA, ray OB, ray OP. They are all one and the same. So that's called a ray. It goes up to infinity. Let's go to the next thing. Line. Line है. इधर से चालू करते हैं. एक रे इधर गया. रे OA goes up to infinity. Either another ray like this, ray OA and ray OB, they are opposite rays. Ray OA and ray OB are opposite rays. This is exactly opposite to this. Such two rays, opposite rays, form a line. It is called a line. इसको line BA बोल सकता है, line BA भी बोल सकता है, और line AB बोल सकता है. और if I put one more point here, line BC बोल सकता है, line CA बोल सकता है, लाइन CO बोल सकते हैं. दो पॉइंट करेगा तो लाइन हो जाएगा. दो ही पॉइंट, लाइन AB, लाइन AC, लाइन AB और लाइन CB, लाइन OB. कोई भी दो पॉइंट लेके तुमको लाइन डिफाइन कर सकता है. लाइन इज डिफाइंड बाय 2 points on it. So this is a ray BA, line BA, line AB, line BC. सब एक ही तो लाइन है. दिस इज लाइन. लाइन ऑल्सो गोज टू द टू साइड्स अप टू infinity. Here also goes up to infinity. दोनों साइड
इंफिनिटी, इधर भी इंफिनिटी तक जाएगा, इधर श्रीलंका के आजू बाजू में वो अटलांटिक ओशन, नहीं तो इधर पैसिफिक ओशन, नहीं तो किधर भी जा सकते हैं, इधर मून, सन, उसके बाद इंफिनिटी जाता है दोनों साइड, गोes up to infinity. Suppose somebody says there is a line of length 20 centimeter. It totally wrong है. A line has got length up to infinity. Infinity का कोई length रहता है क्या? नहीं. 20 सेंटीमीटर का लाइन नहीं होता है. लाइन goes up to infinity. अगर तुमको एक लेंथ बोलना है इधर, let us say length, this is 20 सेंटीमीटर, so इसको बोलता है लाइन सेगमेंट. दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. AB इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. लाइन सेगमेंट AB और BA दोनों एक ही है. अगर इधर से जाएगा तो BA हो गया, इधर से जाएगा तो AB हो गया. लाइन BA is the same thing as लाइन AB, दोनों में कुछ फर्क नहीं. लाइन AB इक्वल टू 20 सेंटीमीटर होगा तो लाइन BA भी 20 सेंटीमीटर. सो कोई भी साइड से बोल सकते हैं. तो a line segment has got a length, particular length. If you say there is a line of length 20 centimeter, absolutely foolish, because line goes up to infinity. Infinity का कोई length ही नहीं बोल सकता है. So this is first I said ray, first I said point, then I said ray, then I said line, then उसके बाद line segment. Line segment has got particular distance. This distance AB equal to 20 centimeter, or line segment is equal to 20 centimeter. Distance AB equal to 20 centimeter. Distance ऐसा भी measure कर सकते हैं, ऐसा भी measure कर सकते हैं. So you know line segment, ray, point, etc. Now there is a line, let us say AB. If you take any point on the line, for example O, if you measure the angle from here to here at any point, this angle is 180 degrees. So angle here at any point on a line is always 180 degrees. अभी इधर से देखेगा, इधर से एंगल लेगा तो भी 180 degrees. So पूरा एंगल 180 plus 180. So पॉइंट के उधर पूरा एंगल कितना होएगा? 360 degrees. सिर्फ एक साइड में 180, दूसरा साइड में 180, दोनों मिलके 360 degrees. So लाइन के ऊपर एक पॉइंट लिया, उधर का एंगल है 180 degrees. Total angle made by a line is 180 degrees. Now I'll draw a line. This is line L, this is line or M, दोनों it goes up to infinity. Line L, line M. How much is this angle? बोलो. Angle 90 degrees. बहुत लोग 90 degrees बोल रहा है. ये 90 degrees. क्या सबूत है 90 degrees? मैंने बताया नहीं. मैंने बताया नहीं 90 degrees. मैंने पूछा ये एंगल कितना है. बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 90 degrees. मुझे मंजूर नहीं है. कैसे 90 डिग्री बोल सकता है? समझो ये 89.99999 डिग्रीज होगा. तुम लोग कैसा मानेंगे 90 डिग्री से? ये 90 डिग्रीज नहीं है. और 90.00001 होगा, डिग्री होगा.
वो भी 90 डिग्रीज नहीं है। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज unless it is in geometry when you learn, unless somebody tells you or you prove it, you cannot believe your eyes. In geometry, never believe your eyes. दिखता है 90 डिग्री से, दिखने वाला मतलब नहीं है हमारा ज्योमेट्री में, प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो दिया होगा गिवन, और यू कैन प्रूव इट 90 डिग्री, तो बोल सकते हैं 90 डिग्रीज है तो मैं ऐसा एक साइन दे देंगे, इसका मतलब 90 डिग्रीज, दिस एंगल इज 90 डिग्रीज। मैंने बोला पूरा एंगल 180 है तो ये भी 90 डिग्री होगा। अगर दो लाइन when they are intersecting at this point, very important thing, this angle 90 degrees, this angle 90 degrees, this angle 90 degrees, this angle 90 degrees. All angles, all the four angles will be 90 degrees. Very important point you have to note. When two lines intersect, if one angle is 90 degrees, all the four angles will be 90 degrees. Very important point you have to note. So 90 degrees दिया है, then you can say 90 degrees. अगर 90 degrees नहीं दिया, you prove भी नहीं किया, तो तुम लोगों को पूछेगा ये एंगल कितना है, तुम्हारा जवाब ऐसा होना चाहिए, सर आपने दिया नहीं है, हमको मालूम नहीं है, कैसा बनेंगे 90 डिग्रीज, दिस शुड बी योर आंसर। सिमिलरली वी हैव टू लाइन्स, L and L. If I ask you a question, are these two lines parallel? Yes, parallel है, ऐसा parallel है। मैं बोला foolish people, how do you know they are parallel? If they are parallel, they will never meet. They will never meet. थोड़ा सा मामूली ये होगा, हमको कैसा मालूम है थोड़ा सा बेंड है, वो जाके ये जाएगा इधर से अंडमान निकोबार में, वो मीट होएगा। Then if they are meeting, they are not parallel. So don't believe your eyes. Very important thing in geometry, never believe your eyes. Are they parallel? You can immediately say, sir, we don't know. You don't know. Because I have not given you parallel. Have I given you parallel? No. Did you prove they are parallel? No. Then how do you say that they are parallel? You cannot say. If I give you that line L parallel to line M, then if I ask you line L is parallel to M, yes. Why? Sir, आपने दिया है। ये तो एक theorem आने वाला है। Suppose I say that this is 70 degrees and this is 70 degrees. Are they parallel? Yes, because sir, you are given the alternate angles. Sorry, corresponding angles congruent. If corresponding angles are congruent, there is a theorem saying that corresponding angles are congruent, lines are parallel. You can prove it. If you prove it, okay, L parallel to L. If I give you that L parallel to M, then also you can say it is parallel. So you never say a line is parallel to another line unless you prove it or I give you. Right. Never believe your eyes. Very important. Right. Now, since I have given two parallel lines, suppose let us take two lines. These lines may be parallel. I don't know whether they are parallel. You also don't know whether they are parallel. Now, if this is line L, this is line M, this is called a transversal. Transversal. This is line M. L, M, N. This is line N. The two lines are intersected by transversal. We can easily say how many angles are there. There are 8 angles formed here now. 1, 2, 3,
This is one angle, this is second angle, third angle, fourth angle. 5, 6, 7, 8. This is angle number 5, angle number 6, angle number 7, angle number 8. 1, 2, 3, 4. 4 angles here, 4 angles here. Now, angle 1 and angle 1 and 5 corresponding angles. They are called corresponding angles. Corresponding. Similar होना चाहिए. ये लाइन के ऊपर है 1, ये लाइन के ऊपर है. ये लाइन का इस साइड है 1, ये लाइन का इस साइड है 5. 5 1 ऊपर है, 5 भी ऊपर है. 1 राइट साइड में है, 5 भी राइट साइड में. और यू कैन कंसीडर एज अ स्टेप. स्टेप में चढ़ने का, इसके ऊपर चढ़ के उसके ऊपर चढ़ने का स्टेप. STEP. ऐसा वाला एंगल्स को बोलता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स. करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर 1 and 5. और 2 and 5. 2 and 5. 2 and 5. 2 and 6. 2 भी इसके नीचे है, 6 इसके नीचे है. 2 इसका राइट साइड में है, 6 इसका राइट साइड में है. और स्टेप देखिएगा, स्टेप का नीचे इधर, स्टेप का नीचे 2 and 6 करस्पॉन्डिंग. अभी वो साइड का हो गया. इधर ये साइड में आएगा 4 and 8. 4 and 8. They are corresponding angles. दोनों इसके ऊपर है, इसके ऊपर है और इसके ऊपर है. इसका A साइड, इसका A साइड. 4 and 8 are corresponding. Similarly, इसका नीचे 3 and इसका नीचे 7. 3 and 7 are also corresponding. Therefore, how many pairs? There are 4 pairs. These 2 are corresponding angles. 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 Therefore, 4 pairs of corresponding angles. 4 pairs of corresponding. ये draw करके जल्दी take out your pen and notebook. ये diagram draw करो और ये सब लिखो corresponding angles. जल्दी. Now, fine. Corresponding angle हो गया. Next, alternate angle. Three and 5. 3 and 5. Or 2 and 8. 2 and 8, 3 and 5 are alternate angles. There are 2 pairs. 2 pairs of alternate angles, 4 pairs of corresponding angles. ये कैसा मालूम पड़ेगा? Alternate angle कैसा मालूम पड़ेगा? You look at the thing. This looks like a Z. Looks like Z. ये Z है ना? Like a letter Z. 3 and 5. Or Z in the other direction. ऐसा. ऐसा ये Z उल्टा लिखा है. 2 and 8. 3 and 5. Z in this direction or Z in this direction. 2 and 8. These are 2 pairs of alternate angles. Now we go to co-interior angles. Two pairs. 2 pairs of alternate angle, 2 pairs of co-interior angle कैसा मिलेगा? हमको स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट है. स्क्वायर ब्रैकेट आपको सबको मालूम है. इधर देखो 2 and 5.
स्क्वायर ब्रैकेट का है 2 and 5. इधर क्या है 3 and 8. 3 and 8. इधर 2 and 5. So looks like I write 2 and 5. उसके बाद 3 and 8. Looks like square bracket. So हम लोग को 2 pairs of co-integral angles, 2 pairs of alternate angles, 4 pairs of corresponding angles. Very, very simple. We have, again once more I'll tell you, 1 and 5 corresponding angle, 1 and 5. 2 and 6 below the ladder, 1 and 5 above the ladder. On this side, 4 and 8, 4 and 8. Again 3 and 6, 7 below the ladder. 4 pairs of corresponding angles, 2 pairs of alternate angles, 2 pairs of co-interior angles. Just note down all these. Now, properties of corresponding angles, properties of alternate angles, properties of co-interior angles. We have studied about corresponding angles, alternate angles, and co-interior angles. So let us put some other. In the previous one, I put 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. इधर इसके बदले A, B, C, D, E, F, G, H. Angle का नेम 1 के बदले A डाला, 2 के बदले B डाला, ठीक है. So that you will be able to grasp it completely. So we'll say A and E are corresponding angles, B and F are corresponding angles, D and H are corresponding angles, C and G are also corresponding. Now first property is that first one, corresponding angles are congruent. Congruent मतलब equal. Corresponding angles are congruent. मतलब corresponding angles are equal. Suppose A equal to 70 degrees. How much will be E? They are corresponding angles. कितना होना चाहिए? मैंने लिखा है corresponding angles are congruent. So A should be equal to E. A अगर 70 है तो E should be 70 degrees. Now D is equal to 110. H should be 110 because they are corresponding angles. Now again A 70 है, A भी 70 रहेगा. I will tell you about that. A 110 है तो A भी 110 रहेगा. They are corresponding angles. A 70 है तो A भी 70 रहेगा. Right. So these are the angles. One or two things I forgot to tell you in the previous one. What is a vertically opposite angle? If two lines are meeting, angle AOD and angle BOC are vertically opposite angle. देखो OA is going this side, OB is their opposite rays, OD and OC are opposite rays. So when you have this and this are opposite rays, this and this are opposite rays, this and this are vertically opposite angles formed by opposite ray. This is the opposite ray of this,
दिस द ऑपोजिट रे ऑफ दिस। ऐसा एंगल को हम लोग बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सिमिलरली दिस एंगल and this angle are vertically opposite angle, because this ray is opposite to this ray, this ray is opposite to this ray, this angle and this angle are vertically opposite angle. Therefore, a theorem of vertically opposite angle is that vertically opposite angles are vertically opposite angles are congruent. Vertically opposite congruent means if this is 70 degrees, this also must be 70 degrees, exactly 70 degrees. This cannot be 60 degrees, 69 degrees, नहीं हो सकता है। अगर ये 70 है, ये भी 70 होना ही चाहिए, कोई भी हालत में। हाँ, ये 110 है, ये भी 110। देखो एक लाइन का, देखो उधर एक लाइन का 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 70 होगा तो ये 110, ओके। ये इस लाइन का भी ये 70 होगा तो ये भी 110। मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। Therefore, vertically opposite angles are congruent, they are equal. 70 equal to 70, 110 equal to 110. Vertically opposite angles are congruent. I hope you understood everything, and you have understood very well. I am sure about it. So, you like it, share it, and subscribe it. Okay? Okay, कितने मिनट का हो गया?